Hello बच्चों, let's discuss passage 1. Passage 1 says section 37 of the Contract Act categorizes performance into two types. What are these two types? These two types are actual performance and attempted performance. Actual performance refers to the fulfillment of all obligations under the contract, leaving no further task to be discharged. When actual performance happen, no further task is left to be fulfilled. On the other hand, attempted performance, also known as tender. What is attempted performance known? It is also known as tender. Occurs when the promisor is unable to fulfill their obligation due to the hindrances opposed by the promisee. Who is a promisor? Promisor is a person who needs to do or abstain from doing some act, and promisee is the person who benefits from such act. Despite their genuine intention to perform, external factors prevent the promiser from doing so. जो promiser है वो अपने task fulfill नहीं कर पाता है जबकि वो करना चाहता है. Tender of performance can also be of two main types. What are these two main types? These are tender of goods and services and tender of money. In the case of tendering goods and services, the contract is deemed discharged when the offerer presents the goods and services for acceptance according to the contract terms. अगर टेंडरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो जब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्टेंस के लिए प्रोमिसर ने दे दिए, जब उसने ऑफर कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट को हम डीम्ड डिस्चार्ज मानेंगे, मतलब उसने अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर दी है. वेयर एज इफ द ऑफर इज रिजेक्टेड, द ऑफरी इज रिलीव्ड ऑफ देयर लाइबिलिटी एंड मस्ट टेक बैक द गुड्स एंड सर्विसेज. जिस केस में ऑफर को रिजेक्ट किया जाता है उस केस में फिर ऑफरी के पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं बचती है and they can take back the goods and services. Conversely, tendering money alone does not discharge the debtor from their obligation to pay. Even if the debtor tenders the money owed to the creditor and creditor refuse to accept it, the debtor remains liable for the debt. अगर आपका मनी का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका मनी का परफॉर्मेंस है, तो अगर आपने पैसे दिए जितने आप ओ करते थे और क्रेडिटर ने रिफ्यूज कर दिया, तब भी आपकी लाइबिलिटी बनी रहेगी. सो दिस इज अपोजिट टू टेंडरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. According to Section 37 of Indian Contract Act, parties to the contract have a legal obligation to either perform or offer to perform the agreed upon promises. तो parties के दो legal obligation होते हैं, या तो आप perform करो या तो आप offer करो performance के लिए. Okay, the term promise is defined under section 2b. section 2b में promise defined है. अब section 2b क्या बोलता है? as a proposal made by the offerer and accepted by the offeree. तो promise क्या होता है? promise होता है proposal by offerer and accepted by the offeree. Unless expressly exempted in the contract, each party must fulfill their obligation. मतलब हर एक पार्टी का ये लाइबिलिटी होता है कि वो अपने ऑब्लिगेशन पूरे करे, जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोला गया कि अच्छा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत पूरी करो. इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर, अगर आपके प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? द रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड बाय द प्रोमिसेस मेड प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंडिकेट अदरवाइज. तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे उनको प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा. However, when the promise pertains to personal skill or art, the promisor representative are not bound. अगर आप फोटोग्राफर को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें फोटोज खींचनी है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक पर्सनल स्किल या आर्ट का सब्जेक्ट है, तो इसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं होंगे. द ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट encompasses the duties that the parties must fulfill. In a typical contract, both parties exchange something of value such as goods and services or money. For instance, in a sale contract of an automobile, one party has the obligation to transfer ownership of the car while the other party must pay for it. Very simple. The contract establishes the terms governing this obligation, including payment method, amount, and delivery time or location. When responding to an invitation, a tender is considered as a proposal to contract rather than the contract itself. तो अगर आप किसी इनविटेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो जो टेंडर होगा वो एक प्रपोजल माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. ओके, इन द केस ऑफ एमएस ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी वर्सेस एमएस जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, the court held that after the expiration of the tender's validity period, no acceptance would be made.
तो कौन से केस में? ये केस था एमएस ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी वर्सेस एमएस जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड। इसमें कोर्ट ने बोला था कि जब एक्सपायरेशन हो जाती है टेंडर की वैलिडिटी पीरियड की, तो उसमें कोई एक्सेप्टेंस जो होगा वो नहीं हो सकता है। एक्सेप्टिंग द टेंडर आफ्टर इट्स वैलिडिटी पीरियड हैज लैप्स्ड एंड फेलिंग टू परफॉर्म बाय द टेंडरर डज नॉट इनवैलिडेट द forfeiture of the security deposit amount. Okay, now let's discuss the question. What does question number 1 says? Question number 1 says John and Sarah entered into a joint contract to deliver a shipment of goods to customer. According to the contract, John is responsible for transporting the goods while the Sarah is responsible for ensuring their packaging. They both have equal share in the profits for the sale of the good. However, due to unforeseen circumstances, John is unable to transport the goods as agreed upon. What are the implications of Sarah's liability under the contract if John tender his performance and goods cannot be delivered? ओके, तो ये केस है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें जॉन का कोई फेलियर हो गया है, वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो उसका कुछ फेलियर हो गया जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसमें सारा की क्या लाइबिलिटी होगी ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन से सारा's लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज व्हेन शी इज नो लॉन्गर लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली नॉट, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज एक पार्टी नहीं परफॉर्म कर पा रही है इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी भी लाइबिलिटीज कैंसिल हो जाए। दिस इज अ रॉन्ग option. Sarah's liability, now what's the B point? B point is Sarah's liability remain intact and she is still responsible for ensuring proper packaging of the goods. What is C option? C option says Sarah's liability depends on specific provisions of the contract regarding joint promises and liabilities. This is the correct option because it talks about joint liability and promises. तो इसी वजह से सारा की liability आएगी. Now D option says Sarah liability is transferred to John. He becomes sole responsible for the contract. Obviously not, जिसकी जो responsibility है वो वही पूरी करेगा. Question number B say second, Mark and Emily entered into a contract for Mark to provide photography services at Emily's wedding. The contract specifies the Mark will capture and deliver digital photographs of the entire event. However, on the day of the wedding, due to unforeseen circumstances, Mark's camera malfunctions and he is unable to capture any photographs. What are the legal implications for Mark's liability under the contract if he tendered attempted performance की बात की गई है by informing Emily about the camera's malfunction? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बोलता है कि Mark liability is discharged and he is not responsible for providing any photographs. Obviously उसकी liability discharge नहीं होगी, so this is a wrong option. Option B, Mark's liability remain intact and he is still responsible for delivering the digital photographs. This option seems correct, but let's discuss other options also. Option C says Mark's liability depend on whether Emily accepts the attempted performance of informing her about the camera's malfunction. If we compare B and C looks a better option to me. Now read D. Mark's liability is transferred to Emily and she becomes responsible for providing an alternative solution to photographs. Promise C की liability कभी नहीं होगी, promiser की liability है वो transfer नहीं हो सकती है. This is a wrong option. B and C both are correct, but C is a better option because it talks about attempted performance. That is the passage. Now let's discuss the question number 3. Question number 3 is about Alex and Lisa entered into a contract where Alex agrees to provide accounting services to Lisa's company for a fixed monthly fee. The contract specifies that Alex will submit monthly financial reports to Lisa by the 5th of each month. However, due to unexpected illness, Alex is unable to complete the financial reports by the agreed upon deadline. What are the legal implications for Alex's liability under the contract if he tenders attempted performance by notifying Lisa about the delay in submitting the financial reports? अगर उसने attempt किया है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की है उसने इन्फॉर्म करके लीसा को, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी हमें ये बताना है. ऑप्शन ए है एलेक्स लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई. इट इज अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ द अदर पार्टी. सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी सेज एलेक्स लाइबिलिटी रिमेन्स इंटैक्ट एंड ही इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द फाइनेंशियल report. Obviously he is
This option seems correct as of now. Let's see both other options also. Alex's liability depend on whether Lisa agrees to extend the deadline for submitting the financial report. Obviously not. अगर Lisa बोलती है कि भाई मैं extend नहीं करूंगी तब भी Alex की liability होगी. So this is a wrong option. D option, Alex's liability is transferred to Lisa and she becomes responsible for completing the financial report. Again, this is a wrong option. The correct option is B. Let's see fourth question. Fourth question says Emma hires a contractor Jack to renovate her kitchen. They enter into a contract that specifies Jack will complete the renovation within 2 months using specific materials and following a set design. However, during the renovation process, Emma changes her mind about the design and requests Jack to make significant alteration to the other original plan, which will result into additional cost and time. यहाँ पे क्या चीज हो रही है? यहाँ पे हो रही है additional cost and time. What are the legal implications for Jack liability under the contract if he tenders attempted performance by completing the renovation according to original design without incorporating Emma's requested alteration? हमें जैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है इस केस में जब उसने रेनोवेशन ओरिजिनल डिजाइन के बेसिस पे कर दिया और एमा की रिक्वेस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया. सो बी, लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, जैक्स लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल्टरेशन. ऑब्वियसली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल्टरेशन क्योंकि आपने एक रेनोवेशन करने के लिए अग्री किया है. डिजाइन स्पेसिफिक आपने सिर्फ डिसाइड किया, वो ऐसा टर्म नहीं है जिसको आप छोड़ के बस आपने पूरा कर दिया क्योंकि वो डिसाइड हो गया. तो सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी सेज जैक्स लाइबिलिटी रिमेन्स इंटैक्ट एंड ही इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एमाज रिक्वेस्टेड alterations. This option seems correct to me. Let's see if we have a better option. Jack's liability depend on whether Emma agrees to pay for additional cost and grant an extension of time. Obviously अगर वो attempted performance कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी इस चीज पे जरूर डिपेंड करेगी कि उसने एडिशनल कॉस्ट और टाइम दिया है. अगर वो एडिशनल कॉस्ट और टाइम दे रही है तो आपको उसके चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज a contract where you need to incorporate the request of alterations. So this option seems correct. Now let's discuss the option D. Jack's liability is transferred to Emma and she becomes responsible for making the alteration herself. Wrong option. B is also wrong option. C is the correct option for this question. Now let's see the last question, that is question number 5. Sarah owns a small retail store and enters into a contract with Mike, a supplier, to provide her with a specific quantity of merchandise for a promotional sale. The contract specifies that Mike will deliver the merchandise to Sarah's store by certain date. However, on the delivery date, Mike only delivers a portion of the agreed upon quantity due to shortage in his inventory. What are the legal implications of Mike's liability under the contract if he tenders attempted performance by delivering only a portion of the agreed upon quantity? तो हमको ये बताना है कि लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगे अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया है माइक ने सिर्फ एक पोर्शन को डिलीवर करके. ओके, ऑप्शन ए सेज माइक्स लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द रिमेनिंग क्वांटिटी. आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरी क्वांटिटी डिलीवर करने के लिए किया था तो इसलिए डिस्चार्ज तो नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी, माइक्स लाइबिलिटी रिमेन्स इंटैक्ट एंड ही इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द फुल्ली अग्रीड क्वांटिटी. Again, this option looks correct, but let's see if we have a better option. Mike's liability depend on whether Sarah agrees to accept a partial delivery and adjust the terms of the contract. Obviously अगर सारा बोलती है कि भाई मुझे बचे हुए चीज भी चाहिए बट मैं अभी ये एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं टर्म्स को एडजस्ट कर ले रही हूँ अभी के लिए, सो उसकी माइक की लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी एंड इट विल डिपेंड अपॉन सारा. सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड बेटर ऑप्शन देन बी. Last option is Mike's liability is transferred to Sarah and she becomes responsible for sourcing the remaining quantity herself. Mike की liability सारा को transfer नहीं हो सकती है, so this is a wrong option. B is also wrong option because we have a better choice, that is C. I hope this was understandable. Best of luck, study hard.